Assalamualaikum and welcome to my channel. So today's video is all about a keratin treatment for your dull, damaged and frizzy hair. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम घर बैठ के एक अच्छी केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस हेयर लेंथ के साथ केराटिन ट्रीटमेंट सैलून से करवाने जाएं तो आपके ईज़िली 8 से 10 हज़ार लग जाएंगे, और अगर आपके कमर तक बाल हैं या उससे ऊपर हैं तो हर इंच के हिसाब से आपके पैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे। अगर हम केराटिन की बात करते हैं तो ये केमिकल प्रोसेस है जो हमारे बालों में किया जाता है। केराटिन हमारे बालों में होता है, हमारे नेल्स में होता है, और अगर इसकी आउटर लेयर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे बाल और हमारे नेल्स दोनों ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी केराटिन को ट्रीट करता है ये हमारा केराटिन ट्रीटमेंट। ना केराटिन ट्रीटमेंट में ये जो केराटिन प्रोटीन है इसे इंजेक्ट किया जाता है हमारे पोरस एरियाज़ में, हमारे हेयर फॉलिकल्स में, जिसकी वजह से हमारे बाल हेल्दी और शाइनी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम DIY की तरफ। इस मास्क में जाएगा वो है ऑलिव ऑयल, जो कि रिच होता है विटामिन E में, और ये आपके बालों को शाइनी और स्लीक बनाएगा। ओके, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द मास्क इज़ एग। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट, और इसके बाद लेमन के कुछ कतरे, और हमारा DIY मास्क रेडी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। होममेड केराटिन हेयर मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। योगर्ट हैज़ लैक्टिक एसिड दैट हेल्प्स क्लीनिंग योर स्कैल्प एंड इट्स स्किन सेल्स एंड प्रोवाइड्स स्मूथनेस टू योर हेयर। अगर आपके बाल ऑयली हैं, ड्राई हैं या इनमें डैंड्रफ है तो आप अपने मास्क में योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे हेयर मास्क में जाएगा वो है एग वाइट। ऑयली बालों वाले एग वाइट इस्तेमाल करेंगे और ड्राई बालों वाले एग योक इस्तेमाल करेंगे। जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमारे हेयर मास्क में जाएगा वो है लेमन। हमारे स्कैल्प के pH लेवल को बैलेंस करता है और आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। फोर्थ मेन इंग्रेडिएंट हमारा ऑलिव ऑयल। Olive oil is rich in healthy fats and vitamin E that provide more shine to your hair and make them smooth and sleek. हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट केला है। Banana hydrates and moisturizes dull, damaged and dry hair and it is rich in vitamins and minerals such as potassium. ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमारे स्कैल्प के pH लेवल को मेंटेन करेगा। To make homemade keratin hair mask, we will take 1 ripe banana and blend it and mash it until it reaches a lump-free puree. दिस मास्क इन फ्रेश वॉश्ड हेयर। आपने इस मास्क को 1 घंटा अपने बालों पे लगा रहने देना है। उसके बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू या कंडीशनर से अपने बाल वॉश कर लेने हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सेक्शन आवर हेयर।
since I washed my hair, and these are the final results. Okay, so one very important tip. If you have dry hair, apply this mask twice a week, and if you have oily hair, then apply this mask once a week, and that's it, and you will get the best results. I hope my video will help you guys, and if you like it, don't forget to share, like and subscribe to my channel.